Welcome to the channel of Digital to Real. My today's topic of discussion is Hardware Description Language. आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? आज हम हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. वो है क्या, उसका यूज क्या है और उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम शो करेंगे. Hardware Description Language is a specialized computer language inspired from C and C++. Hardware Description Language एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो C और C+ से कुछ हद तक सेम है, पर वो हार्डवेयर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है. जो हमने कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में पढ़े, उन सब के बाद उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए हार्डवेयर की एक लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं, जैसे वेरीलॉग, VHDL, ये सारे आपके हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस हैं जो आपके हार्डवेयर को, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट है, उन सबको डिस्क्राइब करने में ये लैंग्वेज का यूज होता है. बिकॉज जो आपके चिप है, द चिप्स एंड द IC चिप, ASIC चिप्स, they are very complex chips, okay? So you cannot design all the circuits which are there in the ASIC separately with the logic gate manually. अब हाथ से हर एक गेट जो आपके वो ASIC की पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी हो, उसको आप हाथ से एक एक गेट को ड्रॉ करके हम नहीं कर सकते पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट. We need a separate language actually to help us in designing the complex digital logic circuits, be it combinational, be it sequential, be it memory, okay, be it processor. So the usage of hardware description language is vast and it is inspired from C and C++. The language describes the structure of and behavior of the digital logic circuit. What this circuit language does, वो हमें उस लैंग्वेज से हमें क्या पता, उस लैंग्वेज का यूज करके हम किसी भी डिजिटल लॉजिक सर्क्यूट के स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारी गेट्स है, बेसिक गेट्स. तो हर एक लैंग्वेज की लाइब्रेरी में, जैसे वेरीलॉग की लाइब्रेरी हो या VHDL की लाइब्रेरी हो, वेरीलॉग की लाइब्रेरी हो, VHDL की लाइब्रेरी हो, उनके पास इनहेरेंट स्ट्रक्चर्स एंड गेट के, फिर और गेट के प्रिमिटिव्स फॉर द गेट इज ऑलरेडी अवेलेबल. उस लाइब्रेरी से हम लेके यूज कर सकते हैं सर्क्यूट में. Primitive for all the digital logic circuits are available in Verilog and VHDL both. We can make use of them and we can form a bigger circuit that will be a structural way of designing. Okay, and for that purpose it is necessary for you to know the combinational logic also. Suppose you don't know the combinational logic, you know what are the inputs available to you, you know what are the outputs available to you, how the output is dependent on the input that you know. You know the basic functionality of the digital logic circuit. So you can make use of this language, okay, to write those behavior, and those behavior will translate into basic logic gates, which we will see afterwards, okay. So commonly used HDL languages are Verilog and VHDL. A Verilog module of a circuit encapsulate a description of the functionality as a structural or behavioral view of the input-output relationship. So what I mentioned is that how we write the Verilog language, we will write it, how we will write the Verilog code for the digital logic circuit. We will write a code between module and end module. Okay, these are the keywords. Between that, we will write the description. What the description will do? The description will mention the key features of the logic circuit. Okay, they will specify what are the inputs to the circuit, what is the output to the circuit, how the output is dependent upon the input.
those logic circuit or the basic behavior of the function logic circuit, it would mention how many input lines are there, each input line, whether it is a bus input line or is a single bit input line, the output, whether it is a bus output line or single bit output line, whether the gates we will use are the bitwise operator based or are they bitwise on multi-bit. So these are the things we have to mention in the Verilog module. Okay, that is the description. So the Verilog module of a circuit encapsulate a description of its functionality as a structural or a behavioral view of the input-output relationship. What it tells? Either it will tell you the structural view or it will tell you the behavioral view, means what is the input-output relationship of the logical circuit. What the encapsulation means? Encapsulation means we need to express the essential features. So Verilog has the feature of encapsulating the key relationship between the input and output of a logical circuit. This is the basic AND gate given. A and B are the two input of the circuit and out 1 is the output of the circuit. And I have named the circuit as circuit 1. We will see the Verilog code of the circuit. Okay, let's see. So here is the Verilog code of the circuit. I have put the lines I have mentioned the line numbers also for module, for brackets, everything. For whole code I have mentioned the line number. Okay, module, I will read out the Verilog code which I have written. Module circuit _1, that is the circuit name. Then I have close bracket. Inside the bracket I have mentioned input wire A, input wire B, output wire out 1. And here I have put semicolon. Input wire A is the input, B is the input. They are two physical wires. So the Verilog has the keyword wire in order to describe the physical wire. Out wire, out 1, output is also a wire, and out 1 is the output of the circuit. Assign out 1 equal to A and B semicolon and end module. Now, line number 1 module and line number 8, that is the end module. One is module, you see, one is module and line number 8 is end module. Module and end module, they specify the lines between which we will describe the circuit, logical circuit. And the logical circuit named is circuit _1. मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल के बीच में ही हम सर्किट का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं. ओके, डिस्क्राइब अ सर्क्यूट. यू सी, मॉड्यूल और एंड मॉड्यूल के बीच में ही हम सर्किट का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं. लाइन नंबर 2 और 6 क्या है, वो आपका स्पेसिफाई करता है. जो भी लाइन है बिटवीन लाइन नंबर 2 and 6 इट स्पेसिफाई द इंटरफेस ऑफ द सर्क्यूट 1 विद द सराउंडिंग. ओके, इंटरफेस मेंशन करता है. लाइन नंबर 2 और 6 के बीच में जो भी है 3, 4, 5, दे स्पेसिफाई द इंटरफेस ऑफ द सर्क्यूट 1. Interface means what? Interface means how the circuit 1 will interface with the outside environment. Interface, how it will come in contact with the output environment. Means it will have the input, it will have the output. So who will feed the input? What are the input? What output is coming at? How it would feel the input of other circuits? These are called the interface. What is the input? What is the output? That is actually the interface of the circuit. So what they do? The interface means what are the input to the circuit and what are the outputs of the circuit. Okay. A keyword wire in Verilog represent a physical wire in the design. आपका कीवर्ड वायर क्या करता है? वो डिस्क्राइब करता है एक फिजिकल वायर जो डिजाइन में है. ठीक है, डिजाइन का एक फिजिकल वायर डिस्क्राइब करता है. फिर लाइन नंबर 7 यूजेस द बिटवाइज एंड ऑपरेटर एंड द सिंबल एंड स्पेसिफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ द सर्किट. आप देखो लाइन नंबर 7, व्हाट यू सी,
assign out1 is equal to a and b. bitwise क्यों बोला है? because a is also 1 bit, b is also 1 bit, and output of a and b on evaluating out1 is also 1 bit. Okay, so a and b are two 1 bit input and out1 is also a 1 bit output. The keyword assign puts a and b on the output port out1. ए एंड बी का जो इवेल्युएट करके वैल्यू होता है उसको वो आउटपुट out1 में भेजता है असाइन कीवर्ड. दिस टाइप ऑफ असाइनमेंट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस असाइनमेंट. इसको कंटिन्यूअस असाइनमेंट बोला जाता है. दिस मीन्स दैट दिस असाइनमेंट इज ऑलवेज एक्टिव. असाइन कीवर्ड का मतलब क्या है? दैट मीन्स दिस असाइनमेंट इज ऑलवेज एक्टिव. व्हेनेवर ए एंड बी चेंजेस, A and B is evaluated and assigned to out1. जब भी इनपुट A इनपुट B चेंज होगा, A and B को हम इवेल्युएट करेंगे and that we will put in the output 1. We can consider the continuous assignment as a combinational circuit whose output is continuously updated depending on its input. हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? We can consider this assign keyword for continuous assignments. Okay, and for what it is used? It is used for combinational circuit where the output is continuously updated depending upon the input. जहाँ पे continuously output को हम update करते हैं input की value के ऊपर base करके. Hope you have got the idea of what is HDL language, what it is used for, and I have tried to explain it with an example of an AND gate. If you have any doubt, please write to me in the comment section. Okay, please do subscribe the channel, do share the video with your friends. Okay, thank you. Have a nice day.